मैं अकेला नहीं हूँ। अरे मुझे कोई मिल गई है। अब भाई क्या मतलब है? ऑलमोस्ट अ भाई। इमेजिनरी नहीं है वो। हाँ वो मुझसे बात करती है और आपकी तरह बीच बीच में टोकती नहीं है मुझे। Time is passing. Take, take. It will be 60 soon. Then 70. Then 80. Here we go. Here we go. हेलो, हाँ मैं विनर नंबर 7 बोल रहा हूँ। नहीं नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये आपका रिमोट कंट्रोल काम नहीं कर रहा है। हाँ बताओ, एक्साइटमेंट के चक्कर में बैटरी डालना भूल गया। थैंक यू। Here we go. हम एक साथ रहेंगे, पार्टनर्स। There's article about fostering in the contract. Article 11 speaks about you taking care of me like a family member. जो भी है, लेकिन अपने पार्टनर को अगर फॉस्टर पेरेंट रेफर करना है तो बड़ी अजीब बात है ना। You must enter my name. Stella. Stella, pleased to meet you. Never changing, always the same, on and on. What are you doing? मैं देख रहा हूँ तुम स्मेल कैसी करती है, रबड़ की तरह या प्लास्टिक की तरह? Please, there's no need for you to be offensive. I'm not one of those primitive blow-up dolls. I'm the most modern doll. I have the skin as human skin in its composition. I have the fragrance of a young 30-year-old woman who just came out from the shower.
tried herself, and used deodorant. And I must point out that every day I'm a woman who is as if she is 14 days away from her period. So I'm prepared for a passionate sexual union with the men every day. Excellent. Excellent, excellent. वैसे भी जब से मेरा ब्रेकअप हुआ है तब से I have got out of the way of having sex. When sex is in the cushion, you will experience only pleasure with me. You are very self-confident. हालांकि मुझे self-confident लोग उतने पसंद नहीं है. और उसको हटाने में मदद करो. I'm not programmed for heavy physical work. अरे मैं भी इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं हूँ पर करता तो हूँ ना. आ जाओ हाथ लगाओ. Let me say it again. Kiss it. Oh great. Flash of the male sexual organs. Smiling, chatting, cooking. These are the scope of my activities. Carrying out bulky rubbish is not my job. देखो तुम्हारी जॉब है. मैं जो ऑर्डर दूँ उसको फॉलो करना. मैं बोल रहा हूँ उसको उठाओ तो उठाओ. You're forcing me to do a work that I'm not programmed for. I shall obey. But I must retain the right to be angry and to store this undesirable situation in my memory. जहाँ स्टोर करना है करना भी उठाओ. No screaming for help, for example. Should she feel so inclined, scream, then listen. You scream again, then listen again. No, spare that. All silent as the grave, Father. Will I be the first man you make love with? जवाब तो दो. Theoretically, you're the first. If I'll not count the trial period. Trial period. The laboratory trial period, a sort of technical initiation. मतलब तुम कह रही हो कि नहीं. Before I earned my certificate for a complete woman, they conducted a lab experiment with me. The experiment was about sexual flexibility, क्या प्रैक्टिस किया था? sexual fineness. किसके साथ? There were few of them. Disgusting. Quite disgusting. There's no need for you to be angry. After the experiment, they forced me and sterilized me. So, you can say that I'm good as new. मुझे उल्टी आ रही है. ये दूर. बताओ. मैंने एक डॉल ऑर्डर की और पता चलता है कि डॉल भी इनोसेंट नहीं हो सकती. Innocence in our civilization is vastly overrated. It's an anachronism. मुझसे वो जब तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने एक-एक करके किया या सबने एक साथ? It lasted for a week, one by one. कितने लोग थे? 5 men and Barbara, 12. my constructor, and the world's greatest scientist today. She transferred her scale of values when it comes to judging a man. She only checked my kissing skills. और मान लो अगर उसकी जजमेंट मर्दों के बारे में गलत निकली तो That is impossible. She's infallible. She's always right. फिर तो उसके हस्बैंड के लिए बड़ी मुश्किल होती होगी. She doesn't have a husband. She left him. और एक ऐसी औरत ने तुम्हें मर्दों के बारे में बताया. Don't badmouth Barbara. I'm not programmed to listen in. वाह, वो एक्सपेरिमेंट करते रहे, वो भी एक ऐसी डॉल के साथ जो खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकती. Before they put me in the box, they conducted a small party. Everyone had a bit to drink, and then it happened that they didn't take turns in practice. Then? They all wanted it together. और तुमने उन्हें करने भी दिया. They didn't ask my permission. हर की साले यूज्ड माल भेज दिया. Calm down. I'm telling you, after that they forced me and sterilized me. So I'm good as new, as if nothing had ever happened. तुम समझती नहीं हो. मैं डॉल नहीं हूँ. I'm a man of flesh and blood. You mean flesh? हाँ जो भी है. मेरे लिए मैटर करता है कि मेरे से पहले मेरी पार्टनर ने किसके साथ सेक्स किया है. And with how many women you had sexual relationship with? Hey, कुछ मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी इन चीजों में इंटरेस्ट. I'm programmed to be interested in the things that interest my partner. So, with how many women you had sexual relationship with? 39 सालों में उतने ही थे. मैं तुम्हारे एक हफ्ते में Then we are the same. कह सकते हैं.
बस मैंने कभी ग्रुप में ट्राई नहीं I put a spell on you because you're mine. You better stop the things you do. I tell you I ain't lying. I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh no, I put a spell on you because you're mine. कहाँ चली गई? अरे कहाँ गई? Charging. Delete for 1 more minute. Synchronization would have failed. I would have to leave you mid-climax. वाह, तब तुम कह रही हो कि अगर मैं 1-2 मिनट और डिले कर देता तो तुम मुझे बीच में छोड़ के चली जाती। Yes, my system requires energy for synchronization. वाह, बैड मैं भी चार्जिंग के बारे में मर्दों को भी सेक्स के बाद प्यास लगती है। चार्जिंग वैसे तुम ना बड़ी कमाल की चीज है यार। तो तुम्हारी आवाज सुन के लग रहा था कि तुम्हें भी मजा आ रहा है। What makes you think that? तुम्हें एक साथ हुआ ना। I'm programmed to follow your moves. Am I the best? The best in what? Obviously, सांप सीढ़ी खेलने में तो नहीं, पर जब ये बैट पे खेल। You're in 5th place. The one below you was an 80-year-old researcher. His function failed after 2 minutes. तुम कह रही हो मैं सिर्फ उसी से बेटर था। The best was a young chemist. His body was unbelievable supple. His heart had the highest number of beats. Would you prefer I lie to you? Would you prefer I lie to you? नहीं, कभी नहीं।
Maria, my ex. मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि वो क्या सोचती है। तब तक जब तक उसने बच्चे के बारे में बात करना शुरू नहीं करी। उसका मानना था कि हम बस बच्चे के साथ ही खुश रह सकते हैं। Permanent men should have children. That's natural. अरे मेरे लिए नेचुरल नहीं है कि मैं ऑफिस से घर आ रहा हूँ और कोई बच्चा मेरे से बैठ के रो रहा है। मैं उसकी जी दूरी कर रहा हूँ। मेरे फादर मेरी कभी नहीं बनी। दोनों एकदम अलग थे। कभी कभी समझा ही नहीं उन्होंने मुझे। मैं नेवल एकेडमी जाना चाहता था, दुनिया घूमना चाहता था, लेकिन साफ मना कर दिया। और अब मैं क्या हूं? एक मामूली सा स्कूल क्लर्क जिसका काम फाइल को एक टेबल से दूसरे टेबल तक इधर उधर करते रहना है। बस यही रह गया हूं मैं। What about your ex? मारिया 6 महीने की रिप्लेसमेंट के लिए स्कूल में आई। मुझे वो पहली बार में पसंद आ गई, पर बात करने की कभी हिम्मत नहीं पड़ी। जब बात की तो उसके बाद सब बढ़िया था। 2 साल पहले तक, जब तक उसने बच्चे के बारे में बोलना शुरू नहीं कर। That's also normal. तुम मुझे मत बताओ क्या नॉर्मल है क्या नहीं। उस दिन भी वो वही खड़ी थी जहां तुम खड़ी हो। वो वही बोली जा रही थी कि शादी बच्चा, पर मैंने साफ मना कर दिया कि तुम्हारे साथ में बच्चा कभी नहीं चाहता हूं यार। Good for her. Why? Because she realized she had no future with you. तुम कह रही हो शांत हो जाना चाहिए। I'm not programmed to want silence. Maria, silence was the worst. Female silence can be so thundering. Freezes a man's blood. How can silence be thundering? That's absurd. Impossible. यार तुम मुझे दिमाग खराब कर दोगी यार। I have to be what I am. Guilty or not guilty? Stand up woman. Speak up woman. How she had lived on and on. Guilty or not? अरे शोर कम करोगी थोड़ा। अरे शोर कम करोगी थोड़ा। I cook for you, tidy up for you, and yet you're not satisfied. सेटिस्फाइड हूं मैं। बस मैं चाहता हूं कि जब मैं न्यूज़पेपर शांति से पढ़ रहा हूं तो शांति तो मिले। थैंक यू। यार इधर आओ, बैठो। To us. Perfect couple. No arguments, no expectations. I love you, Marco. Love. What is love? Touch, a voice, but no, never a word. Unlike Maria, unlike real one. What is love, Marco? Love is consistency, companionship. Then why don't you wait until I start the dishes? तुम क्यों हमेशा मेरे एक सवाल के बदले में अपने 3 सवाल खड़े कर देती हो? Because I seek logical explanation and answers for everything between us. वो लाइफ हमेशा लॉजिकल नहीं होती, खासकर एक मर्द और एक औरत के बीच में। We are not fighting, but I see the absurdity. I cook for you, tidy up for you, and yet you complain about the unavoidable sounds. तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो?
satisfaction, a pleasing conversation, not complaining about the unavoidable sound. Fates are ceramic, utensils are metal. Noise is inevitable. मारिया के यहाँ से पहले मैं केरला रहता था। मेरी आदत पड़ गई थी कि मैं न्यूज़पेपर शांति से बैठ के पढूं। यहाँ घूमने इतने पैसे तो है नहीं मेरे पास, तो कोशिश करता हूँ कि न्यूज़ के जरिए दुनिया घूमूं। But then, it was not a shared life. Why not? Because you excluded her. बकवास है? देखो, हम औरत और मर्द एक जैसे नहीं होते। हम मर्द ये बात जानते हैं, लेकिन औरत नहीं समझती हमें। वो चाहती है हम उनके हिसाब से चले, समझती नहीं है, चाहती नहीं है समझना। You never changed for Maria. Never compromised your ego. You didn't want a child, even knowing they were essential for her happiness. When she left, you felt tormented. बकवास है ये। No. You wanted a doll because you do not want any obligations towards your life. You wanted a companion who would not expect anything. That isn't love. Love is giving, not just taking. Love is happiness in another's happiness, not just your own. बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वो बारबरा भी ढोंगी है। That's impossible. That's certainly impossible. I Google her. हर जगह उसकी दुख भरी कहानी छपी है। Scientific star, obsessed with her work, but no time for intimacy. Her husband said she barely spoke to her. Ate quickly, went up to her lab, came from the lab, read the newspaper, and all that in silence. तो बिल्कुल मेरी तरह है ना? I have another possible logical explanation of why you choose a doll. You want to hear it? बको, You do not want anyone to take Maria's place. Would you like to have sex? ये अब क्यों पूछ रही हो मुझसे? Because you're sad, unhappy and nervous. I'm programmed to offer sex to a sad and unhappy man. My function is to improve your mood. Simple creatures. They only have sex in their mind and it all is sex. नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं। तो तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। What? Not that either. Nothing to do with that either. Nothing she could think. Nothing she could tell. All right, nothing. क्या कर रही हो? It's time to exercise. क्यों? I must. To keep my body flexible and my skin smooth. मुझे लगा था कि तुम लोगों को ये जरूरत नहीं पड़ती है। It matters to everyone. Even me. You should exercise too. तुम्हें ऐसा लगता है? Yes. In 4 months, you have gained 4 kilos. वो तो तुम खाना इतना जो बनाती हो अपने हाथों से। Because you're so sedentary. You should join a gym. हाँ, जिम। मेरी जेब पहले से ही फटी हुई है। नहीं, मेरा मन है कि जिम जाके लोगों के साथ सोशलाइज करूं। Then here. Exercise with me. It won't cost you anything. तो और भी ज्यादा बेवकूफी हो। अच्छा, सुनो, मुझे कुछ बात करनी थी। I'm listening. कल मेरा बर्थडे है। 40? मारिया मेरे लिए ना हमेशा केक बनाया करती थी, एक बढ़िया सा मील तैयार करती थी और एक गिफ्ट लाके देती थी। सिर्फ पता था कि मुझे क्या पसंद है। I can offer you more vigorous sex. And that will surely नहीं please नहीं you. नहीं नहीं नहीं, बात हमेशा सेक्स के बारे में थोड़ी होती है। Then should we reduce it? हाँ? मैंने ऐसा कब कहा? मतलब मुझे गिफ्ट चाहिए तुमसे, What sort of gift? जो भी तुम्हें अच्छा लगे। I don't have any opinion. Am I not pleasing you anymore? Tell me what to do. तो कोई मतलब ही नहीं। Nobody is perfect. चलो कुछ तो समझदारी की बात करी। I'm sorry. क्यों? I'm not making you happy on your birthday. जाने दो। मेरे पास एक आइडिया है। Tell me. मैं कुछ ऑप्शंस लेके तुम्हें देता हूँ।
तो तुम उनमें से चूज कर लेना, जुए की तरह। I don't have the concept of chance. बात चांस की नहीं, बात चॉइस की है। अब देखो मारिया की गिफ्ट भी तो परफेक्ट नहीं होती थी, पर वो ट्राई करती थी। दैट मेंट समथिंग। You're thinking about Maria again. Never changing, never stopping. Back to the past, never stopping. Why don't you phone her? Why doesn't she phone me? Does that matter who called first? Yes, it does. I don't understand. If you don't phone her, then how can you solve the problem? How can you talk to her without calling her on the phone? I think I know how. Tell me. काम के बाद हम अक्सर कैफे जाया करते थे। एल्डोराडो कैफे। पहली बार भी हम डेट पर वही गए थे। जब से हमारा ब्रेकअप हुआ तब से मैंने गाना छोड़ दिया। डर से कि कहीं इससे टकरा ना जाए। That's just silly. You don't go there so you can't meet her. But what you would like is to meet her. शायद तुम ठीक कह रहे हो। शायद मुझे वहां चले जाना चाहिए। शायद पुराने जख्मों को भूल जाना ही बेहतर है। हेलो, हाँ हाँ माँ, हाँ अरे नहीं नहीं, मेरा बर्थडे कल है, कल आज नहीं है, भूल गई आप। हाँ 40 साल पलक चिपकते निकल गए। नहीं मारिया से बात नहीं हुई, क्यों? ये क्या मतलब बेकार की जिंदगी? अच्छा आपको लग रहा है कि मैंने गलती की है? नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। अरे माँ, वैसे आई एम सीइंग समवन, बहुत अच्छी लड़की है वो। हाँ लव ईच अदर। वो मुझसे झूठ मत बोल। माँ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो यही है, रुक जाओ, आपसे बात करेगी वो। हाँ इसका नाम कर दे। Hello, I'm Stella. I confirm that I'm your son's girlfriend. We love each other. I cook for him, tidy up for him, and fulfill his wishes. Marcus should have had children with Maria. He would be a father by now. I cannot bear children. I'm not programmed for अरे that. बहुत मजाक कर रही है वो, बहुत मजाकिया हो गई है। हाँ मैं आपसे कल बात करता हूँ, ठीक है? Did I make mistakes? हाँ? नहीं, जाने दो। हे भगवान। Does that mean you're religious and believe in God? हाँ नहीं करता हूँ मैं बिलीव। बचपन में करता था, लेकिन जब से मेरे फादर गुजरे तब से मैंने किसी भी चीज से बिलीव करना छोड़ दिया है। What you're saying is absurd. Believers pray because they believe, not because they doubt. Hope and prayer cost nothing. If you aren't a believer, then you're an atheist. Atheists don't pray. शायद मैं हूँ, शायद नहीं हूँ, लेकिन होप की जरूरत सबको पड़ती है, एथीस्ट और बिलीवर दोनों को। Why aren't you a believer? Because believers are ridiculous. What's ridiculous about that? Everyone who believes in God is ridiculous to me, because there is no tangible proof of God's existence. Then you're really a true atheist. You believe the world came into existence through Big Bang. Yes, I believe that. And where is the proof that it all came from Big Bang? Answer me. पता नहीं। That's what great scientists believe. I have received all the knowledge of the whole great religion. I'm familiar with the Darwin theory of evolution and the theory of Big Bang. If I was a man like you, I would rather believe the world is created by the God instead of Big Bang. But everything has to become from something. To start out from something. Then tell me, how can a bang exist if there's no ear to hear it? The cosmos is dead. If nothing existed, how can something explode? How can everything come from nothing? बस बस बस।
Hi, Nico. I explained myself wrongly. हाँ तो मैं कन्विंस बिलीवर हूँ, ना ये कन्विंस ऐसी। But I was chosen. देन मैंने पर पहले $10 के लिए कॉम्पिटिशन था। एजेंसी का क्लेम था कि ये डॉग कि गलत का परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। मैंने अपने बारे में सब बताया। मैं अकेला रहता हूँ, मैं फॉस्टरिंग के लिए एकदम फिट हूँ। तो भाई मुझे एक नॉन डिस्क्लोजर भी साइन करना पड़ा है। तो मैं किसी को भी नहीं बता सकता कि तुम एक डॉग। वैसा बता दिया तो सब खो दूंगा। क्या दूध की दौड़ पानी का हक। I was lucky. You were prototype number 7. I was candidate number 7. कुछ दिनों बाद वो लोग मास प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। तब शायद एक डॉग की कीमत एक कार या उससे भी ज्यादा होगी। But you were given to me free of cost. On the basis of my autobiography. Too late. Too late. First phase of India's election concluding on Friday, on Monday, and two parliamentary constituencies, and you will see 21 Too late. Too late. 60% of the Did someone upset you? दिन में कुछ ऐसा सुन लिया था कि ज़्यादा मूड खराब हो गया। And who's to blame for that? तुम्हारी वजह से हुआ है ये। Me? हाँ तुम। How can I be to blame? दिन में एल्डोरा तो कैफे गया था, जहाँ मारिया के साथ जाता था। तुमने कहा था ना जाने के लिए। And what happened there? मैं मिला उससे। How nice! Did you tell her that you miss her? No. Then you still love her? No. Why not? कि वहाँ वो किसी दूसरे के साथ थी। But हाँ कोई नया बॉयफ्रेंड था, मिलाया उसने मुझे उससे। हंस के बता रही थी कि अगले महीने दोनों शादी करने वाले हैं। she wanted to marry you. हाँ पर ये चूतिया अमेरिका में रहता है, शादी के बाद वापस चला जाएगा। जब बच्चा हो जाएगा तो मारिया भी चली जाएगी। What baby? She is pregnant. So it's good then. और हूँ। For her, of course. यार तुम कुछ नहीं समझती हो। वो इतनी जल्दी मूव ऑन कर गई, प्रेग्नेंट हो गई। तो मौर्तना सब साली ऐसी होती। Why are you angry? You didn't want a child or a marriage. She did. Isn't this logical? लॉजिकल शब्द अगर एक बार अपने मुंह से निकाला ना, तुम्हारी बैटरी निकाल के फेंक दूंगा। To make myself clear. I'm sorry. I did not mean to hurt you. Should have.
I should have gone to El Dorado earlier. I should have proposed her. I should have made a baby with her. Should have lived differently. Baby should have been mine. Do you know why you don't want a child? Was don't like to. No, that's what you convince yourself. But it's not true. Your auntie on your father, he just disappeared. You think the same thing would happen, Elise? तो ठीक है but it's too late. कल नहीं आज अभी मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके चलता हूँ तुम्हें सबसे सुंदर ड्रेस दिलाऊंगा फिर हम एल दोरादो जाएंगे Why? कि मैं मारिया और उसके चूतिया बॉयफ्रेंड को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास भी कोई है उससे ज्यादा यंग है उससे ज्यादा सुंदर है Will that make you less angry? Less sad? bad day terribly bad day luckily I have you I will do everything just to make you happy. thank you There's no need for you to thank me. That's how I am programmed. मैं कितनी बार मना किया है कि शब्द का इस्तेमाल मत किया I'm sorry. Why are you reading the paper so often? Watching TV more than usual? इलेक्शन कैंपेन चल रही है नई गवर्नमेंट आने वाली है मैं देखना चाहता हूँ कि क्या होने वाला है And what did you vote for? नहीं होता भी नहीं That depends कि जब भी मैंने लेफ्ट को वोट किया तो राइट जीत गया जब राइट को वोट किया तो लेफ्ट जीत गया And Maria, who did she vote for? ऑपोजिट ऑफ मी That means she voted for the winners. तुक्का था Why do you always talk about her? वो solitude is unbearable. Like better to have someone than to be alone. Alone. दस पता है मैं कल कहाँ गया था Where? मैं कल पार्क गया था वो किंडरगार्टन के पास हो हाँ मैं बच्चों को खेलते हुए देख रहा हूँ It was very strange. What's strange? मतलब पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया बच्चे तो स्कूल में भी हैं पर इतने छोटे बच्चे नहीं हैं छोटे बच्चे ना बड़े स्पेशल होते हैं जिंदगी भर देखता रहा पर कभी नोटिस ही नहीं Are you growing old? आया Can you stop it? No one can. Those who try, they only make fools of themselves. अरे वो पिज्जा डिलीवरी वाला आया होगा जाके पेमेंट कर देना Picha ma'am. Thank you. Wow. Nice face. Wow. Beautiful. क्या बाल है आपके? वाह. क्या स्किल है? If you don't mind, मैम क्या मैं एक सेल्फी ले सकता हूँ? Sure.
Yes. Ma'am, E. I'm not programmed for E. Let me say cheese. Thank you. Payment? पेमेंट नो 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 फ्री 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 आपके लिए सब कुछ फ्री मैम प्लीज आपके फादर को मेरी तरफ से हेलो बोलिएगा डॉन Thank you. He said that I'm beautiful. That I have a complexion that looks well cared off. शूट दिया Why? He didn't say anything bad. नहीं नहीं इसमें गलत कहाँ है कोई बंदा आके मेरे घर के बाहर मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ के जाएगा ये तो बहुत अच्छी बात है ना That's what he said. Ah. Saying hello to my father. फादर फादर कैसा देखता था वो Short, brown. He was having a gold chain around his neck. अरे हटाओ यार इसको यहाँ से हेलो नहीं आपके पिज्जा के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं है लेकिन जो बंदा आया था वो बड़ा बदतमीज था फ्लैट नंबर क्या है 7. हाँ फ्लैट नंबर 7 के बाद मेरी गर्लफ्रेंड के साथ छेड़खानी करके गया है वो अरे योर अपॉलजी मींस नथिंग टू मी फाइन But that's not true. It is of no importance to me whatsoever how he succeeded. He didn't do anything wrong. तुम नहीं समझोगी अगर तुम हमारी तरह होती ना नॉर्मल तब शायद तुमको समझ में आता So, I should have been vain. Exactly. Because if you were vain, you wouldn't always be asking stupid questions and acting surprised by everything. Vanity isn't always a bad thing. If it weren't for vanity, the bird would have stopped developing long ago. Even Barbara didn't do out of vanity to prove she's the best. Nothing can justify lies. क्यों नहीं? हम एक साथ रहते हैं. The definition of girlfriend and a boyfriend are two people who live together and love each other. You never said that you love me. Never taken me out from this flat. Never to a public space. हम मशीन्स नहीं हैं. हमारे पास हर चीज की सॉल्यूशन नहीं होती है. वैसे कल हमारे स्कूल में सेलिब्रेशन था. मारिया की कलीग भी आई थी. मैं खुद को रोक नहीं पाया. I asked about her And and ने मुझे बताया कि दैट क्रीप ऑफर्स जिसे मैं हैदराबाद में मिला था उसने उसे छोड़ दिया. उसके अमेरिका में एक बीवी दो बच्चे हैं. she had no idea. No, she had no idea that she was in a relationship with a married man. दोस्त ने बताया कि Maria is very desperate. He's in total shock. That's a chance to win her back. Did you tell her that you miss her, that you still love her? She is pregnant with another man's child. Does that matter? If you love her, you love her. If you don't, you don't. But that simply doesn't work. So, you're going to live alone forever? नहीं, क्योंकि I have you. Tomorrow is 6 months since I came into your life. तो क्या हुआ? मैं नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा. तुम्हारी क्रिएटर वो बारबरा, हाँ, बारबरा साइन करूंगा. उसको सब बात बताऊंगा. फिर तो हमेशा के मेरी. Have you kept journal? Sent regular reports to them? मैंने रोज जर्नल लिखे हैं. मैंने उनको बताया है तुम क्या फील करती हो, तुम्हारा बिहेवियर मेरे लिए कैसा है. बस एक आखिरी जर्नल लिखना है बाकी है. फिर तुम मेरी. What makes you so sure? Oh, I'm satisfied with you. I never recalled you saying that. अगर you According to agency rules, dolls are allocated to only those men who are satisfied with them.
And under the condition that the doll is satisfied too. That was not in the contract, baby. It was Article 46. अच्छा Article 46. The user and the doll should have achieved high level of mutual respect and compatibility. Compatibility. Everything I went through you, I went through all of it today. को कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या फील कर रही हो, क्या सोच रही हो? They're coming tomorrow to establish that. My report on you is not positive. And that means tomorrow is our last day. You are joking. You are joking, right? Absolutely, you are joking. You know that I'm not programmed to have a sense of humor and to make people laugh. उसका मतलब है इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि as a man you are rating me negatively. Yes, you're egotistical, selfish, jealous. You only think of yourself and your own pleasure. You never showed interest in me. You insulted me. Judge not that ye be not judged. For with what judgment ye judge, ye shall be judged. And with what measure ye meet, it shall be measured to you again. You are a doll, just an ordinary doll. Yes, I'm a doll because that's how you treated me. If you had treated me as a princess, I would have been a princess. Your partner is the reflection of how you two behave towards them. हमारी बारबरा ने तुम्हारे दिमाग में भांग घोसड़ा भर के भेज दिया है. No, everything has set up in such a way that I adapt your value system. Do you know why the word of so many people is a pure hell? Everything that has happened between us, you created it. If it has been heaven or a hell, you are the one who deserves the credit. You probably treated Maria the same way you treated me. I wanted a doll, not a prattling woman like you who does not know how to You stop. wanted a doll because you do not want any obligations towards your life. Enough! I don't want to hear another word. You can't listen because you do not want to hear. But they didn't tell you. For the last 2 days I'm programmed not to say what you want to hear. As of tomorrow, you're on your own. You are going to be put on the agency's blacklist. For 40 years, you did not manage to have something permanent with any woman. रो और नहीं सुन सकता. Noted. And anyways, I have already said that what I wanted to. Would you like me to go into the bedroom? Or will you go into the bedroom? You go, please. That's the first time you said please to me. I shall be happy to fulfill your wish. Hello, Maria. Smartphone. How are you? I met your colleague. She told me about. How is your pregnancy progress? Maria,
You should take care of yourself. Give the baby too. You are not alone. And है कोई So that I never stop caring for you. Maria, I want to meet you. Why do you say one day? It's possible today. I think right now. So just send me your address. I'll come there. Okay? I heard your conversation. Eavesdropping. No. I have a cute hearing. Much better hearing than you people have. ले जाना है. Are you going to see Maria? हाँ. Will you sleep over at her place? पता नहीं. कुछ कह नहीं सकते. I thought you would love to. मतलब शायद रुक भी जाओ. When the agency people will come in the morning, what should I say to them if you aren't back? Tell them. Tell them I'm grateful For what? for everything. For you. जब मैं अकेला था तब मैं सच में अकेला नहीं था. तुम थी मेरे साथ. Learn that thing what do from me. I have learned a lot from you as well. वो क्या है? Let's say how a woman should not be treated by a man. ठीक है यो. No woman should allow a man to treat her like a doll. Ever. I'll remember your advice. Well, it's not important. And just know, if I don't see you tomorrow, then goodbye. Goodbye. Don't forget your keys. Please, would you like to take something from this place? As a souvenir? No, thank you. I shall only take the memories. Well, they are the only things. Here you go! Would you like to have sex? On the basis of my autobiography. Then you're crazy to work it. You believe the world came into existence from big bang. Yes, I believe that. You're thinking about Maria again. And you take them with you from a relationship that leave enough for the next day. Please give up for them. This was Paul Rafi. Thank you for being a wonderful audience and turning up in good numbers. Please give it up for yourself again. And our favorite Zomato delivery guy, carrier guy, our savior, Professor Kanhaiya ke paas. I'll introduce you to the crew of this production. Whosoever is here, kindly come onto the stage. The stage manager of this production was Ritika Davai. Light design and operation by Sachin. Craft by Nishka Chaudhary.
Set team and management by Gitesh, Nitish, Ritika, Jay, Kaustubh and Aditya. Costume by Shri Sarkar. Script and visual assistance by Kaustubh and myself Parth. Poster by Andrew Hussain. On documentation today we had Gitesh and Nidayan and Gitesh as well. Music was done through online resources. This entire production was under the guidance of Professor Kanhaiya Katwal. Special thanks to Professor Rajiv Venichetti, Professor Naushad Mohammad Kunu, Hari Babu, students of first years and second years, and designed and directed by Ehsan Habib Bipu.